Jai Shri, a little eye-opener what we are talking about. Every banker, the pain area, RBI penalty. It's a silence, I don't have to speak much about it. Isn't it threatening? This is the latest circular जिसकी हम बात करने वाले आज. I hope everyone is aware of CKYC, the latest circular from RBI. Again, the other regularities like PFRDA, IRDA, everyone has the same circular issue. This is where we stand. After the threatening, it's CKYC, we are here for integrated compliance solutions. Euphoria technology is basically into different verticals: document management system, business process outsourcing, application development, staffing and recruitment. The main concern what we are here is for central KYC, that is CKYC. I hope most of us know what is CKYC. A little glimpse of it, what we are going to talk about it. What is CKYC? It's a central KYC registration maintained by CERSAI, in which different financial institutions like RBI, SBI, IRDA, PFRDA, हर कोई involved है. जितने भी financial institutions के हैं, all the regulations are involved into it. Now, when is CKYC required? Everyone knows KYC कब चाहिए होता है when we are opening bank accounts. All the different financial formalities when we are getting the customers onboarding. So we require KYC in that. Now, what is this CKYC? Why CKYC? KYC से अलग हटके हम CKYC पे कहाँ आ गए? Why this government initiative? I heard many of us talking about digitization, go green initiatives. This is what is one more initiative from a government. To avoid duplication of work at back office, uniformity of information across all the financial institutions. हर जगह हमारा एक ही identity होनी चाहिए. That is one person, not with the duplication of different names and different documentations. Manipulations, different money laundering. Now the main concern here is what are the steps. Since it's a very start process, so I am just taking you to the start. How do this CKYC is being done? सबसे पहला process होता है SY registration. We need to register to the CERSAI site. Then comes digital signatures, जो banks को require होता है. Then comes digitization, that is scanning of documents. जो भी हमारे बैंक के forms होते हैं, जो भी हमारे POA, POI होते हैं, जो भी documentation form के साथ होते हैं, that is the scanning. Then comes your CBS integration, because every bank is using CBS, तो आपका सारा data CBS में होता है. तो CBS integration होता है क्योंकि वहाँ से data लेके then we have to upload it to CERSAI. Cropping, what is called as photo and signature cropping. Indexing, जो भी CERSAI की site में additional requirements होते हैं other than आपका CBS जो data होता है. There are more than 140 fields in CERSAI site. तो वहाँ से थोड़ा data आपके CBS से लेके और थोड़ा वहाँ से लेके we do it indexing. Then finally the CKYC number is being generated. So this is the entire step and process in the CKYC. What are the features? It's done on the CKYC portal. Any financial institution update of particular person, कहीं भी किसी भी financial institute में आपका update होता है या account open होता है, across all the financial institution, be it bank, be it insurance, be it broking firm, anything, उसमें सारा data आपका uniformity में सब कुछ चला जाता है. So it saves on the time. Now what is the CKYC diversification? Mainly क्या process इसमें होते हैं? 4 main processes होते हैं. एक manpower requirement. Of course, when we are talking about indexing and data inputting. Then comes the digitalization, that is scanning of the documents. Then the software part, how to integrate from your scanned documents to the CERSAI site. And then obviously the training, how to use it further. एक बार होने के बाद में, because that's going to be the continuity.
आपको कंटिन्यूस प्रोसेस है ये, henceforth every account has to be opened under CKYC. Basically I'll be talking about framework. हम सारे banks fall under 3 categories, A, B, C. C means जहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स का डिजिटाइजेशन हुआ ही नहीं है. B means जहाँ डिजिटाइजेशन हो गया है, the second process, and then A where third process. When we are talking about डिजिटाइजेशन हुआ ही नहीं है C कैटेगरी में, where do we stand is सारे रिकॉर्ड्स जो आपके मैनुअल रिकॉर्ड्स हैं उसको हमें ट्रांसफर करना होगा, that is under digitization. So we transport all the records, sort and prepare CKYC sequence because all these records have to be in sequence. पता नहीं कितने सालों से हमारे गोडाउन में हमारे वो रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, तो उनको सीक्वेंसिंग करना, स्कैनिंग और इंडेक्सिंग करना, एंड देन मैनुअल एंट्री ऑफ कस्टमर डिटेल्स जो सरसाइट की साइट पे है और हमारे CVS में नहीं है, उसकी मैनुअल एंट्री करनी पड़ेगी. दिस इज जस्ट स्टार्ट बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ द 90% बैंक्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी जहाँ हमने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है. Then comes type B where digitization has been done. उसके बाद का प्रोसेस आता है हमारे पास में, that is interface with existing CVS, bulk scanning and indexing जो हमारा legacy data है. यहाँ हम बात कर रहे हैं न्यू अकाउंट बिकॉज RBI की सर्कुलर के हिसाब से 1 जनवरी से जितने भी नए अकाउंट ओपन होंगे that has to open under CKYC. And obviously one more threatening is T+2. The new circular which says कि आज अगर कोई अकाउंट ओपन होता है 2 दिन के अंदर अंदर उसका CKYC नंबर जनरेट होना चाहिए. So this is all new accounts what we are talking about. लेकिन and the duration is 1 जनवरी से 1 फरवरी तक ये काम हो जाना चाहिए. Now when we talking about legacy data जो हमारे पुराने कस्टमर्स हैं, how do we take that ahead? So that also comes under digitization, interface with your existing CVS, bulk scanning पुराने डेटा का, process CYC input data and crop images of your photo and signature. Then the type A which are little ahead of all the things is CKYC repository exit, जहाँ पे scanning हो चुका है, indexing हो चुका है, henceforth further process. That is make a check or validation. Because once we upload the data, it has to be finally submitted before the checker submits it. Prepare structure for upload to CKYC server, audit and reconcile is what we are talking about. जितने data reject होके वापस आते हैं, उनको वापस audit करके उनको वापस upload करना because it's a huge task. 3 simple stages CKYC workflow. कस्टमर विद नो CKYC नंबर, ऑब्वियसली हम सबके पास यही है, जो भी कस्टमर आते हैं उनके पास फिलहाल CKYC नंबर नहीं है, या फिर एग्जिस्टिंग कस्टमर या फिर न्यू कस्टमर. मेजर इश्यूज ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स हियर, लैक ऑफ DMS, हमारा डेटा प्रॉपर नहीं है. When we were talking with NABARD, we found most of the data जो CKYC को रिक्वायर्ड है तो हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स के पास में वो डेटा नहीं है. So there's a lack of DMS क्योंकि एक जगह स्टोरेज भी नहीं है. बैंक रजिस्ट्रेशन इन सरसाई a big thing again, अभी तक तो हमने FI रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है. मैन पावर एंड द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग इज रूरल एरियाज जहाँ पर पहुँचना मुश्किल. नो डिजिटल बैंक सिग्नेचर एंड देन फंड्स. How we can help cooperative banks? First of all, we register your bank on the CERSAI portal. We have an end-to-end solution from start to end will be with you all. We are ready to place 10,000 people across the country. सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब हम CKYC की बात करते हैं तो हमारे existing staff को हम कितनी जल्दी ट्रेनिंग दे पाएंगे, कितनी जल्दी वो ये सब काम कर पाएंगे, because RBI is already issued कि हमें करना ही करना है, तो हम उनको कितना डिस्टर्ब कर पाएंगे. So that's where we come into it. We have our trained staff who has developed the entire system and who is working on it. So we provide you manpower for it. We have had over 100 inquiries where we are running right now. We provide you with software, manpower training. Why manpower training? कि एक बार अगर आपने कर दिया उसको अपलोड, आगे से सारे हमें CKYC में ही करने हैं, न्यू फॉर्म्स जितने भी आते हैं. तो henceforth we will give you training to your existing staff कि आगे से आप लोग इसको हैंड होल्डिंग करके आप लोग इसको कर सकते हैं. We
provide you with, we will make your digital signatures on your behalf. We provide all these services at your doorstep with best price. Why Euphoria? We are talking about timely targets because RBI has already issued a start and end date. We talk about the timely targets. We talk about MIS update, which is very important because सबसे बड़ा challenge हमारे पास है जब हम data upload करते हैं, you get loads and loads of rejections from sell side. So how to maintain that MIS, how to maintain the lowest of rejections, we provide you with MIS updates. Cost effective, of course, as I said. We have expertise because we have a team who has developed the entire software of CKYC. We have our own scanners. The biggest thing what we have our asset is we have a manpower which carry the scanners along with them to your branch. और वहीं पे जाके scanning करके we create the digitization. Software track regulatory change. Now when we are talking about manpower, we have a separate vertical which is staffing and recruiting. I'll hand over to my colleague Arun who will take you just 2 minutes for the staffing and recruiting. Thank you, Manisha. I am taking care of staffing and recruitment in Euphoria Technologies, where we require manpower in CKYC. We have some 10,000 plus outsourced people working for various of our clients. Staffing solution. We do recruitment, transfers, migration. Recruitment means it's basically जब हम लोग को urgent basis में requirement होता है for this kind of profile, there it is like scan, you require a documentation guy or data entry operator, sales person. We do a recruitment on behalf of a client. Or if the client has some people working on their roles, we can absorb them or transfer them on our roles. We do payroll management for all these employees. We do security compliance management, end-to-end engagement program, exit formality till FNM. So from recruitment till FNM, we all do the process behalf of our client. This person will be on Euphoria Technologies role, so our client does not have to increase their headcount. Talent acquisition, as I have told you, we source people as per the client's requirement. We help clients for salary negotiation with the client, make sure that candidate joins on the date, manage turnkey projects, specialize in the business requirements in BSFI sector, as we are all here from the BSFI sector. We also hire actual levels across all the verticals. So this is basically a permanent requirement for all of your clients. And even we do a project-based recruitment. For example, if some of the clients require a project-based requirement, where the project is for 6 months or maximum of 1 year, where you don't want to increase your headcount and liability for that particular person. So we do that also. RPS is another different vertical into staffing and requirement. We run the show of, this is basically a recruitment process outsourcing for our clients, where we manage entire HR show. If, for example, if some of the companies or organizations want to boom up their requirements in shorter periods, where we help them into getting recruitment, lineup of interviews, scheduling the interviews of business heads, offer letter generation, joining formalities, inductions, and FNF for all these candidates, which will be the core employees of your organization. So these are the 3 verticals we take care of the HR domain in staffing, recruitment, and RPO sector. We have a demo also. If anyone interested, we can even take you through the demo in our stalls. These are the prestigious
client what we have right now. Thank you so much. Manisha ji, thank you very much, and Arun, thank you very much. Sir, what do you want to offer? What are your offerings to the cooperative banks and cooperative societies? CKYC, what you want to do? Sir, are you okay with the CKYC acceptance? आप सब लोग जान चुके हैं CKYC के बारे में सर? सर थोड़ा हाथ, किसी कुछ पूछना है सर मैडम से, कुछ और जानना चाहते हैं आप? माइक है, माइक दे दूंगा मैं। अभी चौथा सूत्र आज का What type of support you are providing to banks? So what we are saying is we are talking about end-to-end solution. आपके FI रजिस्ट्रेशन से लेके CKYC जनरेशन तक, CKYC नंबर जब तक जनरेट होता है, सॉफ्टवेयर, मैन पावर, ट्रेनिंग, एवरीथिंग कम्स अंडर इट। कभी कभी आपका डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपके पास भी नहीं है, आपको जाके क्लाइंट से कहाँ गांव खेड़े में इकट्ठा लेना है टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, या कई बार आपको टेली कॉलिंग करके उनकी डिटेल्स भी लेनी होती है जो हमारे पास नहीं होती है। तो हम उसके लिए आपको स्टाफिंग जो प्रोवाइड करते हैं वो टेम्परेरी बेसिस पे, ऑन अ प्रोजेक्ट बेसिस, कि 5 महीने 6 महीने के लिए वी प्रोवाइड यू विद स्टाफ वेयर यू डोंट हैव टू हैव एन एडिशनल लाइबिलिटी। कॉस्टिंग क्या आ सकता है? कॉस्टिंग व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ? कॉस्टिंग ऐसा होता है कि CKYC में आपकी बैंक की स्टेज पे है, हर एक का कॉस्टिंग डिफरेंट होता है। अगर आपकी बैंक ने डिजिटाइजेशन कर दिया है सो वील कॉस्ट यू ऑन द प्रोसेस बेस। हाँ, तो कुछ नहीं किया होता तो कॉस्टिंग 2 टाइप का होता है, एक हम नया डेटा के नए अकाउंट होल्डर के ऊपर करते हैं, दूसरा हम लीगेसी जो पुराना डेटा है। तो कॉस्टिंग डिपेंड्स कि पहला तो सॉफ्टवेयर, उसके बाद में सेकंड आता है कि हम डिजिटाइजेशन, वी चार्ज यू ऑन पर डॉक्यूमेंट। तो डिपेंड्स ऑन हाउ मच बल्क और कहाँ हो सकता है। हमारा सेंट्रलाइज है, अगर हमारा छोटा बैंक है तो हमारा डेटा सेंट्रलाइज है, अगर हमारा बड़ा बैंक है तो वो रीजनल लेवल पे होगा, या 4 या 5 रीजन हमने क्रिएट किए होंगे तो वहाँ रीजनल लेवल पे हमें वहाँ से डेटा लेना होगा। तो एवरी बैंक कॉस्टिंग विल बी सेपरेटेड। जहाँ जिस स्टेज पे आपको हमारा सपोर्ट चाहिए, हो सकता है आपको हमारा सपोर्ट आगे नहीं चाहिए, सिर्फ आपको हमारा सपोर्ट सिर्फ सॉफ्टवेयर पे और ट्रेनिंग पे चाहिए तो उसका कॉस्ट अलग से होगा, या फिर आपको सपोर्ट चाहिए कि नहीं कंप्लीट आप FI रजिस्ट्रेशन के लेके आप हमें सॉफ्टवेयर भी दो, आप हमारा सारा डेटा हमारे डॉक्यूमेंट ले जाके उसका स्कैनिंग करो और उसके बाद में आप ही हमारे सिस्टम से इंटीग्रेट करके और हमको CKYC नंबर जनरेट करके दो। तो उसके लिए फिर अलग प्रोसेस और अलग कॉस्टिंग होगा। बैंक टू बैंक वी कैन हैव कॉस्टिंग इज अ सेपरेट थिंग। व्हाट वी अंडरस्टैंड इज फर्स्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ व्हिच इज हैंगिंग ऑन आवर हेड्स। तो हम कितना इसके लिए प्रिपेयर हैं, दैट इज द मेन थिंग। कॉस्टिंग तो बाद में आती है बिकॉज वो तो हमें करना ही है, नो चॉइस अबाउट इट। तो प्रिपरेशन पहले देखनी पड़ती है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन कैसा है, आपका डेटा कहाँ पे पड़ा है, कहाँ डंपिंग किया हुआ है। हो सकता है हमारे इतने पुराने रिकॉर्ड्स 20-25 साल पुराने जो हम स्कैन भी ना कर पाए, उसके लिए हमें नया रिकॉर्ड उसी को लाना होगा। तो दैट इज द मेन थिंग। और कोई पूछना चाहते हैं सर? With this, we conclude this presentation. May I request Dushyant Sinha ji, Vagela, Executive Officer, Gujarat State Cooperative Society Federation, give a moment to our speakers. So kindly give a moment to the Madam Manisha Saxena ji and our colleague Arun. Thank you, ma'am, for your presentation today. Mr. Arun, thank you very much.